सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है एंड व्हाई यू शुड डू टेक्निकल एनालिसिस बिफोर ट्रेडिंग। बेसिकली समझो कि ट्रेडिंग हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस दैट व्हाट वी हैव एनालिसिस्ड, and we are doing investment on the basis of fundamental analysis. So the basic difference between technical analysis and fundamental analysis means when you are doing fundamental analysis, your goal is to view is large, you are looking for the long term investment. But when you are doing technical analysis, then that is basically your view is short term and you are looking for a trade where you can entry or exit in a certain period of time. But you don't, but in investment you don't even should have the prior time to exit from that trade, you can say, of your investment. So today in this video we'll cover on the technical analysis, that what is technical analysis and why you should obviously do before any of the trading technical analysis. So the first thing that I have to clarify, that when you are doing trading for the short term like 5 minute or 10 minute scalping, then उसके ऊपर there is no connections of fundamental analysis and trading for the short term period. Like for the short term, Nifty can be downward or Nifty can be upward for the short term, but we cannot justify on the basis of fundamentally how Nifty is performing on the 5 minute movement, right? I hope you get it. दैट हम 5 मिनट के मूवमेंट के ऊपर हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि निफ्टी 50 का जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एक इंडिसेस है या एक बुल इंडिसेस है, वाइस वर्सा। आप किसी भी स्टॉक के सिमिलरली भी आप इस एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हो. सो वी आर डूइंग टेक्निकल एनालिसिस फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग. लाइक इफ आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, then okay, then like that, like here you can see that if you short here like that hypothetically, okay, so the first thing that everyone can predict and everyone is mastered after the market. No one is master when the market is actually running, and no one is as predictable as good when market is already running. But we are on the aftermarket positions of the market. Okay, so let's suppose that you make a short position here, so when you are making a short position, that you can see that your profit could be here. That is the level where you could still be in the trade and you could make that kind of profit. But we don't know what the market could be. मार्केट इधर से कंसोलिडेट करके ऊपर भी फट सकता है एंड हमारे स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं. वी डू नॉट नो एनीथिंग इनटू दैट मार्केट. दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्चुअली मेकिंग लॉसेस इन द मार्केट. So if I have to tell the 5 fundamental thing that is included in the technical analysis, then the first thing is price action trading. We make a video on price action, ki what is the meaning of price actions and why you should do price action trading over using any kind of indicators or parallel by using indicators, because price action is supreme. Price, every indicators and everything follow the price. Okay, so the second thing is chart pattern. We haven't made any video on chart pattern, but soon we will on the a completely package on the chart pattern video on this particular channel. Make sure that you subscribe our channel to get notified from all the upcoming videos. And the third thing is indicator. What is indicator? We talked a video on that indicator portion, that we cover the five most important indicator that you should ever know before trading, and you should definitely check that video to clarify all the hesitations of yours on the indicator portion. And the fourth thing is trends. कितने प्रकार का ट्रेंड होता है, लाइक डाउन ट्रेंड, लाइक अप ट्रेंड, लाइक साइडवेज, लाइक बुलिश अप ट्रेंड, लाइक बेरिश साइडवेज. ये सब कुछ चीज़ हम लोगों ने कवर किया है. आप जो सिंपली जाओ मेरे चैनल के ऊपर, आप सर्च करो, या आप यूट्यूब के ऊपर भी सर्च करके आप किसी भी बड़े क्रिएटर का वीडियो देख सकते हो. उधर से आपका बहुत क्लैरिफाई मिल जाएगा. द मेन पॉइंट इज़ यू हैव टू लर्न
and you have to start investing as soon as possible. And the fifth thing is entry and exit level. Entry and exit level is one of the most important thing in trading, and this is the I could say that entry, if you can decide that where you can entry or where you can exit, that 80% of your work is done, because entry and exit is the most important thing in trading. You can enter onto that trade A. अगर आप मान लो हाइपोथेटिकली आप इस ट्रेड के अंदर यहाँ पर एंट्री करते थे, शॉर्ट पोजीशन के अंदर आप यहाँ पर अगर एंट्री कर देते तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर हिट होता, बिकॉज मार्केट ने इधर से ऊपर भागना शुरू किया, राइट. देन द मेन पॉइंट इज एंट्री एंड एग्जिट इज द मोस्ट important thing into that market, and most of the people using technical analysis for long term investment understand that. फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया मैंने, फंडामेंटल एनालिसिस से मेरा स्टॉक चूज़ किया, स्टॉक चूज़ करना सब कुछ कंप्लीट, एंड मुझको अब एंट्री करना है मार्केट के अंदर. सो आई विल डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक्निकल एनालिसिस. मतलब टेक्निकल एनालिसिस क्या बोल रहा है, दैट आई कैन एंट्री नाउ और आई शुड एंट्री लेटर ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक या कंपनी, राइट. सो एंट्री एंड एग्जिट आपको डिसाइड करने के लिए यू मस्ट हैव टू डू द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट. टेक्निकल एनालिसिस आपको बोलता है कि आप एंट्री और एग्जिट कहाँ पर कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से. ओके, सो इसीलिए आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, इसीलिए आपको चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए, इसीलिए आपको हर एक चीज़ आना चाहिए जो ट्रेडिंग के अंदर रिक्वायरमेंट है, लाइक इंडिकेटर्स, पोर्शंस एंड सो ऑन. आपको समझना चाहिए कि MTFA क्या होता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है. ये सब के ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर. आप लोगों ने SMC के ऊपर भी मैंने 5 वीडियो का एक सीरीज़ बनाया है, वो सीरीज़ का प्लेलिस्ट मैं कर दूंगा, तो उधर से आप SMC के सारे कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हो, लाइक लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है, लाइक FVG क्या होता है, BOS क्या होता है, CH क्या होता है, ये सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है. ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है. सो या आई थिंक टेक्निकल एनालिसिस यही होता है. मतलब टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं इस मेनली इस 5 चीज़ों के अंदर. अगर मैं रिपीट कर दूँ, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर, ट्रेंड्स एंड एंट्री एंड एग्जिट. दिस आर द 5 थिंग्स दैट comes under the technical analysis portion, and you should master it before any of the trade you take. Okay, so I think आपको समझ आ गया है. If you have any confusion, then ask in the comment sections. I will definitely try to answer them, and I will see you in the next video. Bye. Stay with us and stay part with our journey, and we will definitely make a big family in future. Definitely. Bye. I will see you in the next video. Bye.